Hello students, good evening. This is Chaitali here and I'll be teaching you geography today. Before we continue, I would just like to remind you about the last lecture that y'all had with Sandhya ma'am. She taught y'all geography, she taught y'all Marathi grammar, and today I'll be teaching y'all geography. So let's begin. So the topic for today is physiography and drainage of India. I hope you all would be knowing that this is the most important topic of geography. Also, this is the most difficult topic as it contains a lot of weightage. Also, it has lots of question answers. So I'll be making it easy for y'all, and also I'll be trying to give y'all some important things which y'all can remember while learning the chapter. So here it is. Before continuing with the chapter, I would also like to tell y'all that geography has only India and Brazil. Now, having India and Brazil is a bit difficult for all students. That why हमारा देश छोड़ के हम ब्राज़ील को क्यों पढ़े? But there is a reason. Okay, if you all know, बहुत लोगों ने जिन्होंने पढ़ा नहीं है उनको शायद नहीं पता होगा, but जिन्होंने पढ़ा है उनको पता होगा कि geography में सेकेंड चैप्टर में बहुत सारे सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज के बारे में बताया. ओके, सो लाइक इन बेसिकली आई विल स्टार्ट हियर फर्स्ट बाय गिविंग यू जस्ट अ स्मॉल इंट्रोडक्शन. ऑलराइट, सो दिस इज वर्ल्ड. ऑलराइट, आई नो वर्ल्ड सर्कल नहीं होता है, ओके, बट आई होप यू ऑल गेट दैट. नाउ दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, राइट, एंड दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट. Now, if you cut it into half, north hemisphere and southern hemisphere, right? Northern hemisphere and southern hemisphere. Now, when we do the calculation, अब I think एक part ऐसा है जो तुम लोग को portion में अब नहीं है, deduct हो गया है. That is the degrees, east longitude, west longitude, and everyone is happy for that. But I think that was the main part which should have been there. Now, India is over here. Okay, let me cut it into west and east also. India is here, okay, and Brazil is here. Now, see, dissimilarities मैंने अभी बता दी. एक तो नॉर्थ में है इंडिया और ब्राज़ील साउथ में है, राइट. नाउ इंडिया इज इन द ईस्ट, ब्राज़ील इज इन द वेस्ट. टाइम डिफरेंस तो है ही है, साथ में क्लाइमेट डिफरेंस भी बहुत बड़ा है. So this was something which was there in chapter number 2, plus its longitude, latitude, east, west, north, south, जो भी है वो सब था. But in this chapter we'll study the whole thing. We'll study about its physiography, its drainage. Okay, India का physiography, India का drainage, Brazil का physiography and Brazil का drainage. Let's move further. Alright, so let's see what are the topics that we'll cover today. Is Physiography of India, the most important part of the chapter. Okay, that is Himalayas, alright, North Indian plains, Peninsula, coastal plains and islands. Okay, now Physiography of Brazil, we have Highlands, Great Escarpment, coastal regions, plains and island group. Now, in Physiography of India and Brazil, I have covered almost whole part because that is really important. Okay, you all also have an answer on write the differences or similarities between India and Brazil, right? When it comes to drainage, I have covered the whole part, but most importantly, it's Amazon basin and Himalayan drainage, okay, which is the most important part. Now, let's move on further with Himalayas, okay, Indian physiography, Hamara Bharat, okay. Now, if you see, before moving further here, now Himalayas first of all कहाँ पे आते हैं? Is this the part where, okay, sorry, okay, this is the part where we have Himalayas, right? Now, what's the first note given over here? It extends from Pamir Knot in Tajikistan. This is India. अब of course इंडिया के अलावा और भी बहुत कंट्रीज है, राइट. सो नाउ हियर इज समवेयर वी हैव तजाकिस्तान एंड हिमालयाज आर एक्सटेंडिंग फ्रॉम देयर, ओके, विच इज इन पामिर नॉट. हियर इट्स ऑलरेडी मेंशन्ड हियर, ओके,
Pamir Knot in Tajikistan, right? And from Jammu Kashmir, when we specify specially about India, we have Jammu Kashmir here. So Jammu Kashmir to Arunachal Pradesh, that is this whole part. Okay? This whole part. Secondly, there are many parallel ranges. Now, why many parallel ranges? Now, when we continue, okay. Okay, sorry, just a second. Yeah. So now, when we say many parallel ranges, so from here we have many parallel. It's parallel, it's not crisscrossed. Okay. So here we have Nepal and Bhutan, which is no more included in our country, right? It's one of our neighboring country, and here we have China, right? Now these Himalayas, they are parallel to each other. They don't crisscross. Okay. How are they given here? The most southern is the Shivaliks. Southern as in this, south. Abhi जिनको नहीं पता है, north is ऊपर, south is नीचे. Okay, this is west, that is to your left side. Okay, I am not moving this way, right, left, ऐसे नहीं. When you face the map, left hand side is west and right hand side is the east. So now, this is north. So north and south, right? So southernmost is the Shivaliks here. It's given here. Southernmost is the Shivaliks. Then next to it are lesser, greater and trans Himalayas. Okay. So how will you learn this part? Learn se bhi zyada easy hai, it's to understand. Okay. That they are parallel to each other. The southernmost is the Shivaliks, known as Shivaliks, and the above one is the old Himalayas or the greater Himalayas. So it goes, जैसे हम बोलते हैं ना, बच्चा, फिर उसके पापा, then उसके दादाजी and परदादाजी, same way this goes that way, where Shivalik is the youngest mountain. Then we have lesser, greater and trans Himalayas. Lesser, greater and trans Himalayas. Okay. Now these ranges from south to north. South to north. Again, नीचे से ऊपर, south to north. Alright. And are from young to old and ranges from young to old. As I said, bachcha, uske papa, dadaji and pardada. Now got it? This is how Himalayas, and again they are not crisscrossed, they are parallel. Okay, ऐसा नहीं कि अच्छा दादाजी के बीच में पापा घुस गए, nothing like that. Okay, they are parallel. Alright, of course थोड़ा आगे पीछे है, it's not straight line. मैथ्स की तरह लीनियर इक्वेशन या उसमें कैसे हम स्ट्रेट लाइन करते हैं वैसा नहीं है, बट इट्स पैरेलल टू ईच अदर. ओके, देन नाउ दिस इज फर्दर डिवाइडेड. अब जैसे मैंने बोला ये साउथ टू नॉर्थ में डिवाइडेड है, वैसे ही दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स, 1, 2 and 3. विच पार्ट इज दिस? दिस इज द नॉर्दर्न पार्ट. दिस इज द नॉर्दर्न पार्ट, राइट. नाउ नॉर्थ में वो साउथ और नॉर्थ तो हो गया. अब जब हम इसको ऐसे वर्टिकल करते हैं, व्हेन वी मेक इट वर्टिकल, तो ये वेस्ट हो गया, राइट, ये सेंट्रल पार्ट हो गया और ये ईस्टर्न पार्ट हो गया. तो वैसे ही ये हिमालयाज को वेस्टर्न हिमालयाज, राइट, सेंट्रल हिमालयाज एंड ईस्टर्न हिमालयाज. ऑलराइट, नाउ वेस्टर्न हिमालयाज को क्या बोलेंगे? कश्मीर हिमालयाज. सबको पता है कश्मीर कहाँ पे है, सबकी फेवरेट प्लेस है. मोस्टली सब लोग 10th के बाद वहाँ घूमने भी जाएंगे. So, of course, please see Himalayas. Then we have Central Himalayas, alright, which are known as Kumaun Himalayas. Okay. Okay, Kumaun Himalayas, Nepal and Bhutan. Again, one more tourist place to visit. Alright, and then we have Eastern Himalayas, that is Assam. Alright, Assam Himalayas. So, this is how Himalayas are divided. 3 points, just 3 points. Again, कहाँ से कहाँ एक्सटेंड हो रहा है. अब ये चीज़ याद रखना क्योंकि ब्राज़ील में सिमिलर पॉइंट्स है. ऑलराइट, ब्राज़ील में वी हैव सिमिलर पॉइंट्स वेयर कहाँ पे एक्सटेंड हो रहा है वो. ओके, कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है? यंग टू ओल्ड, दैट इज साउथ टू नॉर्थ, एंड डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. दैट्स इट, एंड जस्ट नेम द 3 पार्ट्स. इज दिस थिंग क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. Then we have North Indian plains. Okay, one more important thing. Now, अब यहाँ पे
when I'm teaching you all Himalayas, see, India is divided into 5 parts actually. If you see only India, then it's divided into 3 parts. एक तो हिमालय का पार्ट, फिर आता है नॉर्थ इंडियन प्लेन, एंड देन दिस पेनिनसुला, देन दिस पेनिनसुला पार्ट. सो वन बाय वन इंडिया को तीनों पार्ट में डिवाइड कर दिया. स्टेट्स ने तो डिवाइड कर ही दिया इंडिया को, अब फिजियोग्राफी भी डिवाइड कर रहा है. So Himalayas, that is what we studied right now. Now we'll study about this part, that is the North Indian plains. All right. So this part is North Indian plains. All right. All right. Now the thing is, see, where is it? It's between Himalayas and Peninsula. Right? It's the middle part between Himalayas and Peninsula. From where does it extend? From Rajasthan and Punjab. So here this is Punjab, this is Rajasthan, right? I hope you all know. मैप पढ़ा है ना तुम लोग ने? नहीं पढ़ा है तो guys एग्जाम है तो प्लीज़ वो भी पढ़ना शुरू कर देना. So Rajasthan and Punjab in west. So this is the west part, right? To Assam in east. So this is Assam here. This part I hope you all know that. So Assam, this is east. Alright, now here again see, अब इसमें बहुत सारे और divisions हैं. Alright, now this again is divided into 2 parts. एक ये part और एक ये. क्यों? What's the reason? North. Okay, so here I'm repeating this part again. Himalayas was this part, okay, this was the Himalayan part. All right, now North Indian plain में मुझे बस ये जानना है, why is it divided? This part is North Indian plain, okay, which is from Rajasthan and Punjab, starts from here, ends over here in Assam. Why is it divided into 2 parts? Any idea? Here we have Aravalis. Again, जिन लोग ने पढ़ा है उनको पता होगा Aravalis है. एक तो बहुत बड़ी चीज़ है कि Aravali acts as a disturbance. Western disturbances, right? Here this disturbance or this Aravalis is dividing North Indian plain into 2 parts. Okay, now this 2 part has extreme differences. One which is most fertile, okay, alluvial plains, okay, Ganga यहाँ से ही pass होती है, and the most fertile, maximum of the population they live here. Why? Because main occupation is agriculture, and this is the part which is the most fertile, whereas to the opposite side we have deserted part, that is Thar desert, you can even say Great Indian Desert जिसका नाम Thar desert है, और Marusthali. Alright, here it's written here Marusthali. Now before moving further, as I said, this Aravalis के east में we have Ganga plains. Alright, now this Ganga plains, it makes the land more fertile, and also when it comes here, this part, यहाँ से जो ब्रह्मपुत्रा आती है, okay, here when it flows here, so this is the whole different topic, alright, which I'll teach you all further in drainage chapter, drainage part. Before that, when I say about Ganga plains, it flows in India, and when I say Brahmaputra, it comes from China, that is Sangpo, which enters India in Assam, जिसको दिहांग बोलते हैं, the name changes, and as soon as it enters Bangladesh, its name again changes to Brahmaputra. Now this Brahmaputra and this Ganga makes a big delta. I hope you all know what delta is. Maths में साइन आती है, पता है डेल्टा की, ट्राइंगल, ये वाली साइन. तो ये एक्चुअली यहाँ से आई है या वो यहाँ से आया होगा, but this delta is a triangle sign which is used in maths, and here this delta is basically, suppose this is a river and this is how deltas are made. Alright, now how is this and why is this delta made? Delta is basically change. Alright, maths में भी तुम लोग इसी के लिए delta is used for a sign of change, right? Now this here, because of stones or some depositional work, river सीधी तरह नहीं बह सकती, तो उसको अपनी जगह चेंज करनी पड़ेगी, राइट? इट कैन नॉट जस्ट फ्लो डायरेक्टली बिकॉज देर आर मेनी डिस्टर्बेंसेज, सो इट चेंजेस इट्स वे, थोड़ा यहाँ से जाएगा, थोड़ा यहाँ से जाएगा, एंड ऑटोमेटिकली इट विल मेक अ डेल्टा. नाउ दैट्स द बिगेस्ट डेल्टा नोन एज सुंदरबंस.
Ganga Brahmaputra Delta, okay, known as Sundarbans. All right, largest delta of the world. Clear? Next, now ईस्ट का तो पार्ट हो गया जहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ा एंड नोन एज मोस्ट फर्टाइल लैंड. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द वेस्ट ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन्स एंड वेस्ट ऑफ अरावलीज. नाउ अगेन दिस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. हाउ? नाउ दिस इज अरावली, दिस इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वन इज द साउथ, वन इज द नॉर्थ. वाई टू पार्ट्स? ये पार्ट पूरा ड्राई है, यहाँ पे बारिश ही नहीं गिरती है, गिरती होगी तो भी इतनी ना के बराबर. ऑलराइट, दिस इज द मोस्ट ड्राइएस्ट पार्ट. ऑलराइट, एंड दिस वन इज द वेटेस्ट पार्ट बिकॉज जो सिंधु रिवर it has its 4 tributaries, okay, and the fourth one, that is Satluj river. It flows from Punjab, making it the most fertile land. That's why wheat, rice, corns, this all grows in Punjab at a higher scale. All right, so here this part is known as Thar Desert or Marustali, okay, and the southern part is known as Thar Desert or Marustali. Northern part, that is Punjab, is known as the most fertile land due to Satluj river flowing there. All right, again understood, divided into two parts, further divided into two parts, okay, one which is driest, one which is the most fertile. All right, this was North Indian plains. Now the third part, very simple, कुछ नहीं है इसमें, बस ये तीसरा पार्ट है इंडिया का. ये जो V वाला शेप है, that's the peninsula. First of all, what is peninsula? Peninsula is it's covered with water from all the 3 sides. अब तुम लोग बोलोगे 1 और 2 ही तो है. अब ये यहाँ पे ये वाला पार्ट भी काउंट करना है ना, ये भी पार्ट काउंट करना है, राइट? सो 1, 2 and 3. 1, 2 and 3. This 3 part surrounded by water is known as peninsula. All right. Now and it's totally to the south. अब हो गया इंडिया का 3 में बंटवारा कर दिया, एक हिमालयाज, एक नॉर्थ इंडियन प्लेन और एक पेनिनसुला. खत्म. अब पेनिनसुला में कुछ नहीं है, देयर आर हिल्स, कुछ नहीं है, मतलब बहुत है बट पढ़ना कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ इतना जानना है कि हिल्स है यहाँ पे, प्लेटोज है, डेक्कन प्लेटो सबसे बड़ा, ठीक है, हिल्स है, मलाबार हिल है, फिर नीलगिरी हिल्स है. ऑलराइट, देन वी हैव घाट्स, दैट इज वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स, दैट्स इट. Okay, this is what peninsula are, and of course Vindhya ranges and all. So you all have to make sure that in physiography you all remember the important hills, plateaus, then western ghats, eastern ghats, तो सबको ही पता है, तो ये सारी चीज़ें याद रख देना, ठीक है. Then we have coastal plains. अब इसमें सबका दिमाग खराब हुआ होगा, राइट, लर्न करने में स्पेशली. अब जो रट्टा मारते हैं उनके लिए ठीक है, बट लर्न करते वक्त तो क्या लर्न करें, मतलब वेस्ट में क्या है, ईस्ट में क्या है. जिन्होंने लर्न कर लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है, देयर इज अ वेरी सिंपल थिंग ओवर हियर. ऑलराइट, इंडिया की कोस्ट लाइन शुरू होती है यहाँ से. अब जब मैं ये पूरा मार्क करूँ, एक्चुअली मैं पूरा घूमने गई थी, पता है, इतना सब, तो मुझे पता चला ये 7,500 किलोमीटर्स लंबा है. इतना पेट्रोल में खर्चा हो गया मेरा कि क्या करूँ, सब सैलरी वैलरी चली गई मेरी. अब ये 7,500 किलोमीटर्स, इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है, इसको घूमने पूरा लॉकडाउन वही किया है मैंने, इसलिए गवर्नमेंट भी पकड़ नहीं पाई मुझे, बस. तो वही है 7,000. यहाँ गुजरात से स्टार्ट किया था मैंने, मैं गई थी रन ऑफ कच्छ देखने, बट सोचा चलो कोस्ट लाइन देख लेते हैं, तो गुजरात पे स्टार्ट किया और यहाँ पे ख़त्म कर दिया, ठीक है. यहाँ पे बांग्लादेश में तो एंट्री भी नहीं दे रहे थे, फिर मैंने उनको बोला कि मुझे ज़रा कोस्ट लाइन चेक करनी है, गवर्नमेंट ने मुझे ये काम दिया है, तब जाके दिया मुझे, ठीक है. ये समझ गए ना, 7,500 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है, सब कुछ आ गया इसमें. ओके, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट. अभी इसको मैंने, हाँ, यहाँ पे थोड़ा ब्रेक लिया था मैंने, ठीक है, क्योंकि ये वेस्टर्न कोस्ट है, राइट, दिस इज़ द वेस्टर्न कोस्ट. फिर थोड़ा ब्रेक लिया, मैंने सोचा चलो अभी नया शुरू करना है रूट, तो दूसरी जगह के लिए थोड़ा हॉल्ट ले लेते हैं, वरना क्या पता पानी में ही गिर गई मैं. तो यहाँ पे ये तमिलनाडु और केरला के बीच में मैंने गैप ले लिया था, फिर मैंने ईस्टर्न कोस्ट चालू किया, तो दोनों मिला के
पता चला ठीक है 7,500 है। अब जब मैं वेस्टर्न कोस्ट घूम रही थी तब मुझे पता चला अच्छा ये अरेबियन सी है, जो अपन मरीन ड्राइव जाता है ना, वहाँ पे जो बड़ा सा सी दिखता है, क्वींस नेकलेस ऊपर से, दिस इज दैट सी। ओके, इतना ही है, मुंबई में तो सिर्फ इतना ही पार्ट था अरेबियन सी का, बट दिस इज ह्यूज। ओके, सो वेस्टर्न कोस्ट covers the whole Arabian Sea. It meets the Arabian Sea. All right, and when we come to eastern coast, okay, we have Bay of Bengal. What do we have? That is Bay of Bengal. All right, so western coast borders Arabian Sea and has rocky coast. Marine Drive सब लोग गए हैं, तो सबको पता है कितना रॉकी है ना, पत्थर ही पत्थर है, मतलब नीचे गए तो हो गया, फिर पानी तो दिखेगा नहीं, रॉक्स ही रॉक्स दिखेंगे, बस वैसे ही है, पूरा पूरा रॉकी है। ऑलराइट, नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हेन आई वेंट हियर, सी, तो ये पूरा ना वेस्टर्न घाट्स है। दिस वेस्टर्न घाट्स, ट्रैक पे गए हो कोई, मतलब कभी जाते हो ट्रैक पे तुम लोग? अगर नहीं गए तो प्लीज़ 10th के बाद जाना, एन्जॉय करना थोड़ा। लॉकडाउन ख़त्म हो गया, अब सब लोग बाहर तो घूम ही रहे, तो ये भी घूम लेना। अब ये जो वेस्टर्न कोस्ट है ना, दिस इज समथिंग विथ दिस एक्ट्स एज अ बैरियर। ओके, अब यहाँ पे कलसुबाई पीक और ये सारे पीक्स है जहाँ पे लोग ट्रैकिंग पे जाते हैं, ठीक है, इगतपुरी है, लोनावला है ना, वहाँ पे तो गए होंगे सब लोग। आधे लोग वहाँ से पढ़ रहे थे लॉकडाउन में, अपने क्या बोलते हैं वो, आई फॉरगॉट द नेम, बट अपने हाउस में बैठ के, वेकेशन हाउस में जाके वहाँ से लेक्चर्स ले रहे थे। आई होप अगर वो बैठे हैं क्लास में तो पता होगा उनको। सो नाउ लोनावला, कलसुबाई पीक, दिस ऑल कम्स अंडर वेस्टर्न घाट्स। राइट, नाउ दे एक्ट एज अ बैरियर। what is it given here? It consists of western ghats with rivers which are short and swift. अब मुझे बताओ, पानी कभी ऊपर जाता है? पानी हमेशा नीचे फ्लो होता है ना, इट्स अ लिक्विड सब्सटेंस, राइट? सो वाटर, बहुत शॉर्ट रिवर्स मिलेंगी यहाँ पे। इफ यू ऑल हैव सीन, next when we do drainage, I'll show you all that western ghats, almost the whole border is western ghats, and eastern ghats we have short borders, and the mountains are low in altitude. Here we have high altitude, so we don't have much rivers over here. Alright, that's why no deltas are formed. Alright, जब कुछ फोर्स से किसी को धक्का मारो, गिर ही जाएगा ना वो, और किसी को एकदम धीरे से मारो तो लुढ़क लुढ़क के गिरेगा। अब यहाँ पे जब पानी गिरता है एकदम स्टीप, because mountains here are very steep, okay, so when water flows, it flows in a force, okay, now this force does not let anyone come in its way. जो भी पत्थर वत्थर होंगे ना, सब हटा देंगे, because the force is that huge. So now that force does not let any delta form over here. So the main point, and ये fill in the blanks में भी आता है तुम लोग को, estuaries and not deltas. Estuaries means, this is the most important, and most students ask me this question a lot, what are estuaries? Estuaries are something कि जब river flow होती है वो एक ही way में flow होती है, no deltas are found. So when it flows directly. देखना, तुम्हारे पास अगर टेक्स्ट बुक अभी खुली है, नहीं है तो जाके लेके आओ, तापी, नर्मदा, ओके, जो भी रिवर्स ऐसे फ्लो हो रही है ना, एक ही माउथ है उसका, कोई डेल्टाज नहीं है, उसको एस्ट्यूरीज बोलेंगे, ठीक है, बिकॉज द फोर्स इज सो हाई दैट डेल्टाज नहीं बनते हैं, बिकॉज वहाँ पे कोई डिपोजिशनल वर्क नहीं है, सो दे फॉर्म एस्ट्यूरीज, दैट इज ओनली वन माउथ, दैट्स इट. नाउ ईस्टर्न कोस्ट, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एस्ट्यूरीज एंड नॉट डेल्टाज, द वेस्टर्न पार्ट, ओके, द वेस्टर्न कोस्ट, ओके. नाउ let's come to the eastern coast. All right, now eastern coast, other side of the eastern coast is Bay of Bengal. ये पूरा Bay of Bengal का border है, ठीक है, जहाँ पे ईस्टर्न कोस्ट है. अब ये थोड़ा टुकड़े टुकड़े में, ओके, पूरा नहीं है, तो जहाँ पे भी टुकड़े टुकड़े दिखेंगे ना, वहाँ पे तुम लोग को डेल्टाज दिखेंगे. ओके, ईस्टर्न घाट्स आर ऑल्सो माउंटेन्स बेसिकली, ओके, बट छोटे छोटे माउंटेन्स, ये बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं. These are too big mountains, these are small mountains, okay, and this has gentle slope. Gentle slope as in, yes, अच्छा लगा, ये मैं एरोप्लेन से खींचा है मैंने ये फ़ोटो, मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में.
मैं गई थी लॉकडाउन में ही, तो तभी मैंने सोचा कि तुम लोग को पढ़ाना है तो दिखा दूँ। अब यहाँ पे अगर तुम लोग को दिखेगा कि देर इज ब्लैक पार्ट, मीन्स दिस इज अ बिट हाई एंड दिस इज अ बिट लो। ओके, तो ये जो है ना माउंटेन्स बड़े हैं यहाँ पे, मतलब हाई है, द एल्टीट्यूड इज हाई एंड हियर इट्स लो, मीन्स एल्टीट्यूड जो है वो बैठा हुआ है। एंड जब ये हाई रहता है मीन्स इट्स स्लोपी, मीन्स ऐसे स्लैंट में, तो ऑफकोर्स रिवर स्लैंट ही जाएगी ना। एज आई सेड वाटर डज नॉट गो अप, ठीक है, पैर नहीं है उनको, इट्स अ लिक्विड सब्सटेंस, सो इट विल फ्लो। नाउ इट फ्लोज दिस वे बिकॉज ये ऊपर का पार्ट है, ये नीचे का पार्ट है, मीन्स इट्स स्लैंट। नाउ हियर इफ यू सी, ये जो पार्ट है ना ये स्टीप है ये माउंटेन का, इसलिए यहाँ से फटाफट रिवर्स बहती है एंड एस्चुरीज ही बनाती है, वरस ये बहुत स्लोपी पार्ट है। तो जब रिवर्स बहेगी यहाँ से इट विल फॉर्म ट्रिब्यूटरीज, क्योंकि ये आराम आराम से बहेगी, इट विल हैव डिपोजिशनल वर्क्स ओवर हियर, ओके, विच विल इवेंचुअली cut the way of the rivers and let it form the deltas. Alright, and ये रात को लिया था मैंने प्लेन को बोला था थोड़ी देर रुक जा, मेरे को रात का भी लेना है। इंडिया कैसे दिखता है, दिख रहा ना, ये हिमालयाज हैं, बहुत मस्त है ये। सी दिस इज द बॉर्डर, ओके, द टिबेटन प्लेटो, द हिमालयाज, ये वो है। आई होप तुम लोग को दिख रहा है अच्छे से। सी एंड दिस माउंटेन्स आर रियली हाई, रियली हाई। कभी जाओ मनाली, मज़ा आएगा। Okay, now here again one more. Now that's the morning part, this is the night part. So if you see here we have green, lots of green part here, that is mountains, and here we have very light, मतलब plain नहीं, थोड़ा बैठे हुए mountains है जो बहुत high नहीं है, तो ये वो है। तो यहाँ से river को बहना बहुत easy होता है and वो थोड़ा टुकड़े टुकड़े में बहती है, यहाँ पे it flows फटाफट से। Okay, now this was coast. Alright, now here if you see eastern coast borders Bay of Bengal, already said, here it has depositional work, slow बहती है ना, gentle बहती है, तो बहुत सारे पत्थर वत्थर बीच में आते तो उनको ब्रेक नहीं कर पाती, तो वो अपना रास्ता खुद ही अलग से देख के डेल्टास फॉर्म करती है। सो दीज आर डेल्टास। लुक इन योर टेक्स्ट बुक अगेन इफ यू ऑल हैव, you all will see this thing, one second, you all will see गोदावरी, कृष्णा, ये सब अपने डेल्टास फॉर्म करते हुए, ठीक है। जैसे यहाँ पे है, देर आर 3 मेन डेल्टास ओवर हियर, ओके, देर आर 3 मेन डेल्टास। नाउ लेट्स मूव फर्दर विथ, नाउ दिस हियर इट फॉर्म्स डेल्टास। सी, तो यहाँ पे 2 पार्ट तुम्हें हमेशा याद रखना है कि जब कोस्ट का डिफरेंसेस होगा, राइट, मतलब तुम लोग को एक क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन वेस्टर्न कोस्ट एंड ईस्टर्न कोस्ट, दिस इज हाउ यू ऑल विल राइट दैट। One, it is to the western side which has western ghats, one which is to the eastern side which has eastern ghats. Alright, they are short and swift, whereas they are very gentle. What? Rivers, okay. Now here they have estuaries and not deltas, whereas here they have deltas. Reason again being gentle and reason again being very swift. Alright, now let's move on to next. ये देख लिया, किसी को देखना है, ये देखना है तो देख सकते हो, अच्छा है, मैं तो उधर ही रह गई थी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। नाउ आइलैंड्स, मालदीव्स गए हो कभी? नहीं गए हो तो ठीक है, अभी वापस 10th के बाद बहुत पूरी लिस्ट बना देना। अभी मैंने 4-5 जगह तो बोल ही दी है, मैं खुद भी नहीं गई हूँ बट आई हैव आइडिया, मतलब मेरे फ्रेंड्स गए हैं, तो ठीक है। ऑलराइट, नाउ आइलैंड्स, हियर islands, there are small and large islands, okay, small and large islands. When we say, now small and large islands means छोटे छोटे भी है, बड़े बड़े भी है। Now here we have Lakshadweep and here we have Andaman Nicobar, okay. Now these 2 large group of islands, one which is in Arabian Sea, Lakshadweep Island is in Arabian Sea and Andaman Nicobar is in Bay of Bengal. बस ये 2 चीज़ याद रखनी है। Island में भी there is nothing which is much important here, okay, just remember the 2 islands Lakshadweep and Andaman Nicobar, one which is in Arabian Sea and one which is in Bay of Bengal. Alright, now islands in Lakshadweep are atoll islands. Anyone
if you all don't know the meaning of atoll islands, here it is. All right. Okay, it's here. These are atoll islands. All right. Now this atoll islands, they usually look in, they are circle in shape. Okay, because the mountains. All right. Let's see here. Let's say this. All right. Just. Let's say this is land. All right. Now when we have this, ये पानी है. Okay, ये land का area है. ये पानी. Always there is like water. Then again we have land. Now when mountains are formed, like when islands are formed, it's formed this way. Now ये जो part है, इसका ये ऊपर का part है, this is what it looks like. This is atoll islands. Okay, this is atoll islands. Now they are usually circle in shape. Okay, one second. They are usually circle in shape. ये ऊपर से ऐसे दिखता है. That's why this is circle. And coral reefs पढ़ेंगे, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, सबने देखी है. तो उसमें स्कूबा डाइविंग जो था, उसमें कलरफुल जो प्लांट्स, एनिमल्स सब दिख रहे थे, ये वो है. ओके, नाउ दिस आर atoll island. These are atoll islands and this is coral reefs. All right. Now coral reefs भी आएगा. Let's see here. Now, so as I said, Lakshadweep Island and Andaman Nicobar, Lakshadweep which is in Arabian Sea, Andaman Nicobar which is in Bay of Bengal, and it has atoll islands which are circle in shape from upar se. Now here this island are atoll and which is very small in extent and not very high. It's not too high. Malab, yeah, y'all can go there, y'all can have like tourism and all that is there at both the places. I hope you all know that Andaman Nicobar mein bhi hai and Lakshadweep mein bhi hai. And islands in Andaman Nicobar are mainly volcanic, but today, in today's day, there is only one active volcano in Barren Island. Of course, it's the place in Andaman Nicobar itself. It's in the downer part. Okay, not the upper part. Yeah. Alright, upper part is totally sleeping, which is known as dormant. The lower part has some active volcanoes. Alright, now this was island. This was full physiography of India. Alright, all the 5 parts totally done. Okay, now let's move on to physiography of Brazil. पहले तो इसके नाम ही बहुत difficult है. अभी आधे लोगों को तो बोलने भी नहीं आता है नाम. आधे लोगों ने ऐसे ही रट्टा मार लिया, बट आधे लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं है. बहुत difficult names है. Alright, maybe you all can learn. There is a trick to learn this. I haven't actually written over here right now, but sometime in future I'll definitely share it with you all how to learn names of Brazilian states. Before that, let's see the physiography of Brazil. Now there are many similarities. Okay, इंडिया में हिमालयाज है, वैसे ब्राज़ील में हाईलैंड्स है. Okay, highlands. Now this highlands have there are 2 highlands. One is Brazilian highlands, okay, which has 2 names, Brazilian Shield and Brazilian Plateau, and the other one is Guyana highlands. Okay, Guyana highlands. Now where is Guyana highlands? This is Guyana highlands. Here we have, okay, ये मैंने states के map दिया है, ये मैंने physiography का map नहीं दिया है, बिकॉज स्टेट्स याद रखना अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गुयाना हाईलैंड्स कौन से स्टेट से पास होता है. जस्ट लाइक हिमालयाज वी हैव हियर ऑल्सो कहाँ से कहाँ इट एक्सटेंड्स. ओके, सो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम वेनेजुला. इन इंडिया वी हैड तजाकिस्तान, लाइक हिमालयाज वी हैड तजाकिस्तान. हियर इट एक्सटेंड्स फ्रॉम वेनेजुला एंड टिल फ्रेंच गुयाना हियर. नाउ दिस पार्ट हियर, ये पूरा गुयाना हाईलैंड्स है. इट्स नोन एज गुयाना हाईलैंड्स. अमेज़ोनास, रोराइमा, पारा, अमापा. ऑलराइट, अमेज़ोनास पे इतना ज़्यादा नहीं है, जस्ट सम पार्ट इज देयर, अदरवाइज इट टोटली फ्लोज दिस वे. दैट इज गुयाना हाईलैंड्स एंड वी हैव ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स हियर. ओके, दिस इज वेयर वी हैव ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स. नाउ दिस टू
Highlands are the most important highlands of Brazil. Alright, now it covers the northern states of Roraima, see written here, Roraima, Para, Amapá, that is this one, Guiana Highlands, and here it has the most important peak, Pico de Neblina. Okay, it's the name of the highest peak, which is almost 3014 meters high. This act, just like India, okay, China और India के को border करने वाले कौन है? Himalayas. वैसे ही वेनेजुला और इनको border करने वाले कौन है? Guiana Highlands. Okay, Guiana Highlands are the one which borders both, दोनों के बीच में border की तरह act करता है. Alright, then here see, acts as a border between Brazil and Venezuela. East and south of Brazilian highlands have altitude more than 1000 meters. East and south. So this part, okay, and this part has way two differences. Now, if you all see here, other parts there are only 500 to 1000 centimeters. This part is highest. The highlands are high over here, up to 1000 meters. Here we have almost 500 to 1000. Here more than 1000. Here less than 1000. Alright, this is this is Guiana Highlands and this is Brazilian Highlands. Alright, this was the part of Brazilian physiography. Second, Great Escarpment. Just like India, again we have Great Escarpment here, whereas in India we had Western Ghats and Eastern Ghats. Alright, it occupies very small area, just this much. बस इतना सा ही part है, but it plays a major role. Okay, जो climate of Brazil है totally depends on this, means पूरा यहाँ से वहाँ change ही हो रहा है only because of Great Escarpment. Alright, just like India में Western Ghats act as a barrier, okay, जिसके वजह से Deccan Plateau में there is very less rainfall, okay, it's known as rain shadow area. Same way here, because of Great Escarpment, there is no rainfall this side. Alright, there is no rainfall in this side. Now see here, east, it has a great impact on climate, right? And also one more thing, whatever I have written here, बस ये important है, note this down, alright, because this point should be there in your answer. बाकी कुछ लिखो या मत लिखो, ये points include होने चाहिए. ठीक है, this I am saying because last year when it was the first year of this portion, government itself has published e-Bal Bharati pe the papers, what they expect from students to write. Okay, that's why I have written all these points, I have noted it down. Next, Eastern Ghats of Highland is demarcated. I have already written the meaning over here, it means separated. Okay, the eastern side of Highlands. Now here, this is Great Escarpment, it is separated, like both the sides are separated only because of the highlands, and the height of this escarpment is only 790 meters. Alright, it's only 790 meters, steep from Sao Paulo to Porto Alegre and act as a barrier, which I already told you all. It act as a barrier. And abhi I am saying the names of the states. ये सारे states के नाम हैं, Sao Paulo, Porto Alegre. Please book खोल के देख लेना. ओके, तब भी तुम लोग को समझ आएगा मैं कौन से स्टेट्स की बात कर रही हूँ, वरना कुछ समझेगा नहीं. यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा है तो ठीक है, आई थिंक इट शुड बी विजिबल टू यू ऑल कैन जूम इन, एंड इफ नहीं देन प्लीज ओपन योर बुक्स. ओके, साओ पालो, रियो de Janeiro, okay, Espírito Santo, these are some places. Porto Alegre here. All right. So this is how it's, and it's very steep. All right, it's very steep here. Now to the north of this region, now as I said, this is north, this is south. All right, so north of this region, abhi ye Great Escarpment act as a barrier for winds, for the monsoon winds. So there is no rainfall here. Okay, there is no rainfall here. It is known as drought quadrilateral. Okay, again, if you all open your textbooks, you all will know this part quadrilateral कैसे होता है, मैथ्स में पता है ना तुम लोग को. So this is the part, okay, which is totally drought. Now similar to India, to this side, to the west side, Rajasthan, we have Thar desert. To the east side of Brazil, we have Caatinga desert.
ओके, अगेन एक और सिमिलैरिटी आ गया, दिस फुल्ली ड्राई, नो रेनफॉल एट ऑल. रीज़न, यहाँ पे ग्रेट एस्कार्पमेंट है, तो जो बारिश है वो ऐसे ऐसे भी नहीं जाती है, वो फिर यहाँ से जाती है, यहाँ पे नहीं जा पाती है. सेम वे, नाउ दिस इज द वी पार्ट, राइट, यहाँ से बारिश आती है. ओके, दैट्स वाई दिस फॉर्म्स अ वी शेप एंड हियर यू डोंट हैव rainfall at all. Alright, so that's why it's known as what? Drought quadrilateral. Okay, now same, ब्राज़ील घूमने नहीं गई मैं, बट मैंने किसी को भेजा था, क्योंकि मैं 2 जगह तो नहीं जा सकती घूमने के लिए, तो एक ही जगह भेजा था मैंने. तो जस्ट लाइक इंडिया, ब्राज़ील ऑल्सो हैज़ अ कोस्ट लाइन बट 100 किलोमीटर्स कम. इंडिया हमेशा आगे रहता ना हर एक चीज़ में, पॉपुलेशन हो या कोई भी चीज़ें हो, तो सेम वे ब्राज़ील को भी टक्कर मार दी कोस्ट लाइन में. अब यहाँ पे इफ़ यू सी, या when it starts, the Brazilian coastline, it starts from here, all right, it ends over here. Now इंडिया का V फॉर्म शेप हो रहा था, राइट, ऐसा नीचे का, जहाँ ये गुजरात था, दिस वॉज आसाम साइड. ब्राज़ील का ग्रेटर देन का साइन हो रहा है, या ग्रेटर देन, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर इन अमापा टू हियर इन रियो ग्रांड दो स्यूल. राइट, दिस इज 7,400 kilometers long, the coastline. Okay, this is 7,400 kilometers long coastline. Again, like India, यहाँ पे भी आराम कर दिया किसी ने, जो भी गया था, वन ऑफ माई फ्रेंड, उसने भी सोचा कि अच्छा ठीक है, पूरी बहुत लंबी कोस्ट लाइन है, थोड़ी देर आराम कर देता हूँ. तो नाउ दिस इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. One is the North Atlantic Ocean part and one is the South Atlantic. So we can also say Northeast and Southeast part. It's in the east, right? If you cut again this into 4 parts, North, South, East and West. So Northeast and Southeast Atlantic Ocean. Now again same way as वहाँ पे गुजरात से लेके केरला, and here we had from Assam to Tamil Nadu or Kerala. Same way from Amappa to Rio Grande, here it's already written Amappa to Rio Grande, alright, this side, and then from here Rio Grande se leke Rio Grande do Sul pe it stops. Alright, now here this has many islands and many bays. So I hope you all know. Now islands are also there here. Alright, eastern coast has small rivers, Brazil has large number of beaches and sand dunes. I hope you all know Brazil is also one of the coolest place for tourism, especially Rio de Janeiro. ब्राज़ील में एक दो जगह ही है घूमने के लिए, बाकी कुछ भी कहीं भी तुम लोग घूम नहीं सकते. Rio de Janeiro is the most known tourist place, especially for scuba diving and all, because the water there is very clean. 9th chapter you all already have on tourism, so you all would be knowing that, and football fans, especially y'all. Here we have islands. All right, there are many type of islands. So here this was about the coast. All right, now atoll islands, and this you all already have seen, atoll islands and coral reefs. So further let's look on plains. I'll come back to island part. All right, this are found in Amazon basin and Paraguay Paraná sources. Now Amazon basin, this, okay, sorry, just a second. Yeah, this whole part is Amazon basin. Although river जो है वो ऐसे ही flow होती है, ठीक है, this part will come to, but why am I doing this? Because this is the mouth. Okay, then again it slims down and again it opens its mouth. Now here it's found, plains are found in Amazon basin and Paraguay Paraná source. Paraguay Paraná, here we have it here, and Amazon basin, iske beach ka part is known as plains. All right, now mostly it's forested and inaccessible. Why? Because of the Amazon rainforest. Last year we had fire in Amazon forest, right? It was like that part is, this whole part has nothing, only and only forest. This whole part has only forest. All right, there are floods which like happens every year.
एंड डेंस अंडरग्रोथ लाइक फॉरेस्ट ट्रीज बहुत कुछ है बट ह्यूमन बींग्स के अलावा. नाउ आई थिंक इन द 9th chapter the government, like in the 9th chapter they have mentioned that government says about the go west policy, right? It's because here now they are starting to have some development, economical development, but before that here in this chapter there is nothing like that. It's just said it's totally inaccessible, okay, and it's forested, that's it. All right, covered with tropical forest, which you all very well know. He almost 20% of the oxygen we get is from Amazon forest, which has now decreased because half of the Amazon forest is burnt now. Thirdly, we have pantanals over here, the wettest land in the world. Okay, you will find crocodiles here again, and which is located in the southwest part of the highlands. Now this highlands here, Brazilian highlands, इसके साउथ वेस्ट पार्ट में, साउथ एज एन नीचे एंड वेस्ट एज एन टू द लेफ्ट. सो दिस इज व्हाट प्लेन्स आर ऑल अबाउट. सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन ब्राजीलियन फिजियोग्राफी इज हाईलैंड्स एंड ग्रेट एस्कार्पमेंट. बाकी सारे पार्ट्स तुम लोग ऐसे ही गो थ्रू करोगे, इट्स फाइन. यू ऑल ओनली हैव टू गो थ्रू द मेन पॉइंट्स लाइक दिस बिकॉज दिस माइट कम इन फिल इन द ब्लैंक, स्मैश द कॉलम. बट फॉर क्वेश्चन आंसर्स मेक श्योर यू ऑल डू हाईलैंड्स एंड ग्रेट एस्कार्पमेंट. ओके, देन here coastal islands, two type of islands, one is coastal and one is marine island. What is coastal? जो coast के पास होता है ना, alright, उसको coastal islands बोलते हैं, okay, which is almost near to the coast. and जो coast से दूर, अभी यहाँ पे जैसे Marajao Island है, this here they haven't written the name but in your textbook it's there, Marajao Island, it's exactly near the coast, it's touched almost, वो लग रहा है कि वो touched है but it's almost 100-200 kilometers away. This island, it looks like that but it isn't, okay, but still it is known as the coastal island. And जो 300 kilometers away है, sorry, which is 300 kilometers away are known as marine islands, means marine as in बीचों बीच, marine जो sea है उसके बीचों बीच, okay, which is away from the coast. So these are two type of island. Again it has atolls and coral reef, which I already explained you all earlier. Alright, this was physiography of Brazil. Alright, clear with the physiography of India and Brazil. I hope तुम लोग के दिमाग में गया है. Please so much जाना तुम लोग, वरना मुझे बहुत बुरा लगेगा. Okay, next we have drainage. अब drainage में ब्राज़ील के 3 ड्रेनेज है, इंडिया के भी 3 ड्रेनेज है, बट यहाँ पे आई हैव एक्सप्लेन्ड, तीनों ही एक्सप्लेन किया, बट मेनली वी हैव टू डू अमेजॉन बेसिन विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, एंड सेकेंडली इन इंडिया वी हैव टू डू हिमालयन ड्रेनेज विच इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. ऑलराइट, बाकी 2 आर जस्ट लाइक यू जस्ट हैव टू रिमेंबर देयर डिस्टेंसेज एंड वेयर इट इज़ लोकेटेड, दैट्स इट. नाउ अमेजॉन बेसिन, हियर दिस क्लियर है मैप, दिख रहा ना, बहुत ज़्यादा कलरफुल है, प्लीज़ चश्मे पहन के बैठ जाना. नाउ दिस अमेजॉन बेसिन, इफ़ यू ऑल सी हियर, इट इज़ कमिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज, राइट. अब जैसे मैंने इंडिया में बताया था कि सैंगपो, फिर दिहांग एंड ब्रह्मपुत्रा, विच आई विल कवर इट इन द नेक्स्ट दिस हिमालयन ड्रेनेज, बट सेम वे ये जो ब्राज़ील में अमेजॉन्स है, दिस पार्ट, या ये अमेजॉन रिवर आती है दूसरे कंट्री से, वहाँ पे उसका नाम कुछ और है. इट कलेक्ट्स इट्स हेड वाटर्स लाइक द मेन वाटर, ओके, फ्रॉम एंडीज माउंटेन इन पेरू, ओके, फ्रॉम एंडीज माउंटेन इन पेरू. नाउ पेरू इज हियर, या ये रहा, ये वाइट कलर दिख रहा है, अरे सॉरी ब्लू कलर दिख रहा है, वाइट तो मेरे पेन का है, ये ब्लू कलर जो है ना यहाँ से आ रही है, ये सी, दिस इज हाउ फ्रॉम पेरू इट कम्स हियर, इट एंटर्स ब्राज़ील. Right, it is collecting its headwaters from Andes mountain. Huge discharge of 2 lakh meter cube per square. ये बहुत सारे लोगों को confusion है क्या? What is discharge? Basically, if you all see, जो फटाफट से एक साथ निकल जाता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, लाइक ह्यूज डिस्चार्ज ऑफ पॉपुलेशन, ह्यूज माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, ह्यूज डिस्चार्ज ऑफ वाटर. नल फास्ट खोल दोगे तो फटाफट से निकलेगा. तो जब ये यहाँ से बहती है,
इतनी फास्ट आती है कि 2 लाख मीटर क्यूब ईच सेकेंड में 2 लाख मीटर क्यूब वाटर छोड़ती है, ओके, फ्रॉम हियर. दैट इज कॉल्ड ह्यूज डिस्चार्ज. ऑलराइट, नो डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स. 2 लाख मीटर क्यूब पर सेकेंड, कितना फोर्स होगा तुम लोग ही सोचो. तो सेडिमेंट्स कहाँ से बैठेंगे? सिंगल सी ना, देयर इज नो अदर वे. ये एक यहाँ से आ रही है और ये तो दूसरी जगह से है कोई. दिस इज वन माउथ इटसेल्फ. लुक एट इट्स डिस्चार्ज, लाइक लुक एट इट्स फोर्स, कि वो एक ही माउथ से होके फिर यहाँ से वो ज्वाइन हो रही है, राइट. देन इट इज, दिस अमेजॉन चैनल इज ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर्स वाइड. 150. यहाँ से लोनावला से यहाँ अगर तुम लोग गए हो तो अच्छा है, नहीं गए हो तो सोचो यहाँ से कोई ऐसी जगह जो 150 किलोमीटर दूर हो, उतनी बड़ी रिवर है ये. ओके, आई वेंट टू गुजरात एंड देयर आई लिव्ड एट माई मामा's uncle's place. We had to cross that Tapi river. That Tapi river itself was so huge कि 150, वो हार्डली 3 किलोमीटर का ब्रिज होगा, वो 3 या 3.5 किलोमीटर. दैट वॉज ह्यूज. एंड थिंक ऑफ 150 किलोमीटर्स मीन्स ये जो विद है ना, ये अब यहाँ पे एक पतली सी लाइन दिख रही है, बट व्हेन यू लुक ओवर देयर, ओके, जैसे अभी मुंबई अगर इंडिया का मैप होता तो मुंबई सिर्फ एक डॉट दिखता है, राइट, ऊपर से, बट जब अंदर देखते कितना बड़ा है. सेम वे ये डॉट भी नहीं दिख रहा है मुझे, तो ये लाइन, ये जो रिवर है वो ऑलमोस्ट थोड़ी ऐसे डार्क दिख रही है. तो इमेजिन 150 किलोमीटर्स मीन्स हाउ वाइड इट वुड बी. लेंथ तो बोल ही नहीं सकते, बट विड्थ इज सो ह्यूज. So it's almost 150 kilometer wide and most of the part is navigable here. Okay, there is navigation, and now government has mostly done this development over there where people can actually go there especially for tourism, water tourism. वहाँ पे wild animals ज़्यादा है, especially water wild animals which you all can see there. Alright, then next other drainage we have Paraguay Parana. ठीक है, पैराग्वे. नाउ दिस इज रिटन इन टिपिकल ब्राज़ीलियन लैंग्वेज. तुम लोग को ये कुछ तो ऐसे डंडी वंडी दिखेगी आई और ये सब पे, बिकॉज दिस मैप इज लाइक ब्राज़ीलियन लैंग्वेज में लिखा है. बट या पैराग्वे एंड पेराना रिवर विच मूव्स ऑन दिस. देर आर 3 important rivers, Amazon basin, okay, Paraguay Parana, and the third one is São Francisco. These 3 rivers, okay. Now Paraguay Parana, let's come to that. It flows from Brazil and goes to Argentina. Again it changes its name. Alright, it again changes its name. Alright, later meets river Plata in Argentina. Okay, तो again जब ये mix हो जाती है तो वो river Plata हो जाता है तो पानी यहाँ का ही, पैराग्वे पैराना का. ठीक है, जैसे नल का पानी, मटके का पानी, बोरिंग का पानी, अलग अलग है सब पानी, बट जस्ट बिकॉज वेसल्स आर डिफरेंट और द प्लेस वेर इट इज देयर दैट इज डिफरेंट, दैट्स वाई द नेम चेंजेस, दैट्स इट. ओके, सो दिस एंड द थर्ड वन इज साउ फ्रांसिस्को. सी द थर्ड important river of Brazil and it occupies the eastern portion, eastern part. Okay, sorry. All right. Here it's this whole part. It starts from here. Okay, Grond वहाँ पे लिखा है. Okay, in your textbook also you all can see it would be written in normal English language, Paraiba Grond. From there it starts and it flows here. Okay, this whole river is 1000 kilometers long. Okay, the length, I'm not talking about the width. Okay, I hope you all know length and width. 10th में हो तो इतना तो पता ही होगा. This is the length. It starts from here and ends over here. It is 1000 kilometers wide, but only 250 kilometers means इतना ही part is navigable. 250 kilometers of the part is navigable. Navigable as in y'all can go there, like not y'all, as in the fishermen who have their daily work and everything, they can go there. Unnavigable is something where GPS नहीं पकड़ता है. ठीक है, all right, खत्म. ये था ब्राज़ीलियन ड्रेनेज. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द हिमालयन ड्रेनेज. वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. ओके, ये ऐसी चीज़ है ना जो एक सेकेंड में दिमाग में घुसी जाएगी. नाउ एज आई एक्सप्लेन्ड यू ऑल अर्लियर, ये हिमालयाज है ना. अब भी मैंने कुछ बोला कि नल का पानी, बोरिंग का पानी, ये पानी, वो पानी, एट द एंड सारे एक ही पानी है. नाउ रिवर,
जो गंगा रिवर है इट फ्लोज फ्रॉम हियर, दिस हिमालय, लाइक दिस एज इन फ्रॉम हिमालयाज, ये साइड इंडिया के साइड जो फ्लो होती है वो अमेजोन वो गंगा बन जाती है। हिमालयाज के ये साइड, इंडिया के साइड जो फ्लो होती है वो गंगा रिवर बन जाती है। वो साइड जो फ्लो होती है इट बिकम्स सैंगपो, टी इज साइलेंट ओवर देयर, ओके, इट्स नोन एज सैंगपो। इवेंचुअली है अपने यहाँ का ही पानी यार, अपना देश महान, तो वो यहाँ से एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम, राइट। तो अगेन उसका नेम थोड़ा चेंज कर देता है कि सैंगपो क्यों रखे हम, हमारा भारत है यार, तो विहांग कर दिया अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम के लोगों ने, और एज सुन एज ये बांग्लादेश में आ गई नाम हो गया ब्रह्मपुत्रा। सो नाउ गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा हो गए एक एंड इट मेड अ बिग डेल्टा। सी दिस पार्ट, ये जो ब्लू कलर का पार्ट है ना वो इतना बड़ा डेल्टा है एंड इट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा विच आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू ऑल इन नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। ओके, सो दिस इज हाउ, पानी एक ही है, ओके, एक ही पानी है, डिफरेंस इज इट जस्ट फ्लोज फ्रॉम देयर, माउंटेन है यार, ट्राइंगल है ना, तो ऑफकोर्स एक ये साइड जाएगा, एक ये साइड जाना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं ना कि भाई है तो साथ में ही आ जाए। सो दैट इज हाउ दिस गोज। नाउ द सेकेंड पार्ट इज द सिंधु रिवर। अगेन पाकिस्तान को पानी हम ही दे रहे हैं, ठीक है, कैसे, सिंधु रिवर, रवि, चेनाब, झेलम, सतलज, हियर झेलम, चेनाब, रवि एंड सतलज, ओके। दिस इज मीन्स ये पूरा हिमालयाज ही है जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स एंड यहाँ पे पाकिस्तान को पानी दे रहा है। नाउ वाई ओनली हिमालयाज? ड्यूरिंग समर्स दिस ग्लेशियर्स मेल्ट, तो आधे टाइम तो उसका पानी मिल गया और बाकी का आधा टाइम अपने पास मानसून है ही, रेनी सीजन, तो उसका पानी मिलके ऑटोमेटिकली फुल ईयर देयर इज वाटर, लाइक द रिवर्स फ्लो, ऑलराइट। इफ दिस पार्ट वेयर वी गेट ओनली इन मानसून, फिर भी ये 9 महीने आराम से बह सकती है, तो यहाँ पे तो ऑलमोस्ट 8 months इट गेट्स वाटर एंड आधे से ज़्यादा टाइम अपने पास समर ही रहता है इंडिया में। तो ग्लेशियर्स मेल्ट एंड दिस रिवर्स आर, दैट्स वाई नोन एज पेरिनियल रिवर्स, ऑलराइट। here perennial rivers, okay, clear? Ganga system, Satluj, Sindhu system, this part is clear. Now other drainage, ये तो हो गया हिमालय वाला पार्ट। अब अगेन इसको, ये पार्ट इज नोन एज पेनिनसुलर पार्ट, पेनिनसुलर रिवर पार्ट, वेयर रिवर्स तापी, we have Tapi, oh okay, we have Tapi here, Narmada here, no tributaries, okay, single mouth, Tapi, Narmada, and here that is again two sides, एक जो अरेबियन सी को मिलता है that is Tapi and Narmada, and one which meets Bay of Bengal, and there are many, okay, if you see this 1, 2, Krishna, Godavari, Mahanadi, okay, there are 3 to 4 deltas which flow here, all right, and okay, so this Bay of Bengal, Arabian Sea, rivers meeting Bay of Bengal are again swift and slow, they are not fast, because of the slope which I already showed you all earlier, and here this side it has only single mouth. Why? Because it's very steep, all right. Then second most largest river system, that is Godavari, all right. This is what India's drainage is all about, clear? So this was about physiography of India, physiography of Brazil, drainage of India and drainage of Brazil. This covers everything, okay, each and everything written over here. If you all include this points is more than enough for your answers, all right. There is nothing else to do in this. Just remember, you all have to remember each and every states, okay, remember each and every part, which side it flows, which side it doesn't flow, okay, where we have Himalayas, where we have North Indian plains. In short, map अच्छे से याद करके जाना, all right, yeah, okay, that's it for the day, okay. Just one thing, okay, now this was a major as in here it's like something मैप सॉल्विंग, आई डोंट नो स्कूल में कितने अच्छे से करवाया, कितना अच्छे से नहीं करवाया है,
chapter is over. This is something different, like typical map solving, how you all have to solve. I hope you all know 4 marks is for map solving and 4 marks for map reading, 8 marks. तो जो पास नहीं हो पा रहे वो भी पास हो जाएंगे, और ग्राफ 6 मार्क का है. तो कुछ भी करो, ज्योग्राफी इज अ सब्जेक्ट वेर यू हैव 24 marks to 26 marks in objectives. Only 14 marks के question answers है, that's it. So make sure you all do map solving. Just a second. All right, continue. Okay. All right. Now very simple. One thing that I want to tell you all, जैसे map solving तुम लोग करो, I have no idea, but seeing my students, it's really important that you all please make sure कि तुम लोग index बनाओ. One thing which is more important is that you all have to not write names over here. Just write down numbers. First, smallest state Goa. Index पे नाम लिखो Goa and just number दे दो. Okay? Don't write names. If you all write names, gone. Marks gone. Secondly, suppose तुम लोग को first, second, fourth and sixth आता है, तो पहले ये 4 solve करो. According to the rule of government, only first 4 answers. Like suppose any 4 करना है, any 3 करना है, तो पहले 3 या 4 जो किए वही चेक होंगे. Even if the other one is right, still. So which you all know first, do that and later do the other part. Okay? So go number wise. Index में भी number wise डालना. ऐसा नहीं कि पहले first, second, fourth और sixth किया but यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ही number डाला. Wrong. Everything is gone then. Alright, so please make sure you all do this. Clear? Alright. Okay. Alright. Next class you all have of Rudra sir. He'll teach you history. Okay, tourism and history, like tourism chapter. Again, ये याद रखना, ठीक है, ब्राज़ील के टूरिज्म वो भी इसमें आने ही वाला है. So all the best. It is on 19th February and same time 9 to 10. Alright, be live. Alright, thank you so much. Thank you. Bye bye and all the best for your exams.